हेलो गाइस, आज है डे 2 ऑफ POTD चैलेंज। आज का LeetCode POTD है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट्स इन अ सर्कुलर एरे। तो इन अ सर्कुलर एरे द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर एडजेसेंट। फर्स्ट एग्जांपल में है नम्स 1, 2 एंड 4। फर्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एडजेसेंट है वो है 1 और 2 और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1। नेक्स्ट पेयर है 2 एंड 4, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 2। और लास्ट पेयर है जो है फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 3। इन तीनों में से मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 3, इसलिए इसका आउटपुट भी है 3। सेकंड एग्जांपल में नम्स आ रहे हैं -5, -10 और -5। फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट इसमें है -5 और -10, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5। नेक्स्ट पेयर है -10 और -5, फिर से इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 5। और जो लास्ट पेयर है वो है -5 और -5, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 0। इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5। We can solve this using if-else statements, but the right way will be to use these two properties. The first is n modulo n is 0, and the next is x modulo n equals to x if x is less than n and x is greater than 0. I've iterated from I equals to 0 to I equals to n minus 1, and at each I am calculating the difference between the ith element and the I plus 1th element. The only point to note here is that when I becomes equals to n minus 1, this I plus 1 becomes equals to n and this whole index becomes 0. So I'm able to find out the difference, the absolute difference between the 0th, which is the first element, and the last element. And at each iteration, I am also maximizing my answer with this difference. And at the end of this iterations, I am returning this answer.